माई चैनल और आप सब कैसे हो. आई रियली मिस्ड यू गाइज एंड आई नो इट्स बिन 2 weeks since I posted a video, right? It's been 2 weeks. I was on a very good regular pace where I was putting up at least 2 videos in a week, or mostly weekly I used to post. But then things got a little, escalation, and I'll tell you it's all good in the hood. uh, but I thought, let me wait for the right time to finally let you guys know. बहुत लोगों को पता चल भी गया होगा. If you're following me on my Instagram, you'd know. So why was I taking a little bit of time to come back again on YouTube? Is because I had guests over at my place. ठीक है, तो so they stayed with us for a week and more, and therefore it's very hard for you to go out and take random videos and then pile it up together and make a video, because apparently they watch my videos, so it'll be a little awkward when I upload it and they'll watch it in front of me. It's very awkward. I don't like that. I'm a little hesitant that way. I am very confident in front of the camera because I know people watch me without me knowing that they're watching me, as in you guys watch me, but मेरे को नहीं देखना ना कि तुम लोग मुझे देख रहे हो. But if somebody watches this same content in front of me, no matter how good that vlog or video is, no matter how confident I sound, I hate it. I can't stand it. It just creeps me out. There are people, there have been kids, who keep telling their mummies, I don't know, they watch randomly stumbled upon my face and then like, oh, Didi has come, so let's watch it together with her. No, please don't do that. If you love me, don't do that. If I come to your home, you do that, I'm gonna leave. I just can't stand that at all. Okay. Number 2, why was I gone for 2 weeks or more than that? Last one was a morning routine thing, and I'll have to tell you guys that I have successfully done that, and I think I have gotten a little thinner. And a lot of people who have come to see me have said it in the first glance only कि यार कुछ बदला, change हुआ है तेरे में, you have lost a little weight. So that's a great thing. I can get into my old clothes that wouldn't fit me at all. So that is a good thing. So I have been very regularly following that routine, very religiously, by the way. So I hope you all also do something in your homes, because just because ठंड आ गई है, don't मुरझाओ इन योर होम. ठंड में मेरे को भी आलस आता है. आलसी लोगों के लिए ठंड बहुत अच्छा मौसम है, बट अभी ठंड है इसलिए मैंने हुडी वाला पड़ा. अभी हवा आ रही है इस वजह से. सो ठंड में द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस whole apartment is you can come down anytime and walk around with your hoodie and then just chill or listen to music and walk. So the second reason why I was not there is because, let me tell you the good thing, that I have gotten my admission. So yes, finally. So as you all know, I had written my DUCA entrance and I was waiting, and that thing was taking forever. Like the cutoffs, एक महीने के बाद ऐसे आ रहा था, and it was really mind boggling me कि अगर नहीं आया by chance, I had a feeling, a slight glimmer कि आ जाएगा, because मेरे सेम मार्क्स वाले पिछले साल का मैंने कट ऑफ देखा, उनको मिल गया था. But this was taking so long कि what if I don't get it? Then I'll waste this year. And then I can't bear everybody coming on my head and eating it and chewing it up, saying you wasted 1 year. I can bear myself कि चलो एक साल मेरा गया, बट जो बाकी लोगों का रिएक्शन मैं नहीं सह सकती. Anyway, the society was strangling me since the last 2 years of lockdown, saying you're not doing anything, you're wasting your parents' money, you're sitting at home, it was so annoying. It was getting too frustrating कि I was like, ठीक है, इनकी खुशी के लिए मैं DU का एग्ज़ाम भी लिख लेती हूँ. I could have gotten into Bangalore or any college. It's just that थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, because there are like lakhs में जमा कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा. इवन अमिटी, just पैसा जमा कर दोगे तो मिल जाएगा. But I didn't want to like make my parents do that. I just wanted to get done with this. जितना कम पैसा हो सके उतना, you get me, right? Like there are other things that you want to do, like we have to build our home. अभी तक शुरू कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए भी पैसे चाहिए. And there are a lot of other things. You have to be practical and sensible. ठीक है.
also masters was something, especially in English literature, was something that I had lost interest in. तो उस चीज़ के लिए मैं इतनी next level मेहनत क्यों करूँ? तो I thought I'll just write an entrance and see if it works for me. I don't know what has happened to that. I've not checked. First 2 cutoffs में तो नहीं आया था, उसके बाद का मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं. But while I was doing that, while I was thinking, okay, maybe I'll go with the second plan which I had, that is the language part. I could maybe probably take up a translating job or something like that, and but usme bhi you will have to at least give 3 to 4 years to get a good command over a language. It's not a child's play. It's not कि आज मन किया कल तुम्हें आ गया language. 1 साल लगा होगा ना आपको हिंदी सीखने में भी, अंग्रेज़ी सीखने में भी. तो the same way a language, especially an Asian language, it's hard. French was, I'll say, a little more easier. It had more annoying grammar patterns, but because I've learned it in college, unfortunately, it was harder. Okay, it was harder. No, it was easier in that sense कि जल्दी याद हो जाएगा because उसमें English के words है. But Asian, I'm learning Korean, so that's even harder because you'll have to learn the whole. You'll have to get familiar with this whole character thing and all that. But it was going nice. I was doing my level 1. ठीक है, मेरा level 1 चल रहा था and चल रहा है and उसका एग्ज़ाम होगा and उसमें if I do well then only I'll get a certificate for that, which will certify that this person has actually indeed studied this and I've gotten good marks in it, and they can be study it in the future. That's what it is about. Somebody was going and they looked at me like, what is she doing? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, लाइक अभी आदत छूट गई है ये पकड़ने का, तो इट्स वेरी हार्ड. सो दैट मैंने वो होगा, तो आई वॉज थिंकिंग अब मैं उसमें जाऊँ तो दैट विल टेक मोर टाइम एंड विल लुक अ लिटिल. व्हाट इफ आई वन डे लूज माई इंटरेस्ट इन इट. कोइंसिडेंटली आई हैड मेड अ वीडियो अबाउट दिस होल करियर कॉन्फ्लिक्ट थिंग कि what is right now going in my head, just to give you guys a little idea कि if you are also going through that, it's okay, it's fine, because I am also going through it. उसके करेक्ट जिस दिन मैं पोस्ट सोच रही थी कि एडिट करूँ वो सब मिलके, that was supposed to be my next video instead of this. That week I got admission. So it's God. कहते हैं ना, turns my morning into joy, night into day kind of thing happened. Truly it's his work only, because I was thinking, what if at one point I feel like this is not for me, then everybody will blame me again in a full form. Like, what if, like, I'll need a basic skill again, to back me. What if I fall? If I go to that zone, then at least कुछ तो होना चाहिए पीछे बैक करने के लिए कि if ये नहीं हुआ तो at least ये कर सकते हैं types. So I tried to do that. इसलिए आई वॉज पहले वेरी हेजिटेंट अबाउट डूइंग दैट. फिर ओके, सो आई वन फाइन डे आई वॉज सिटिंग एट होम, जस्ट गोइंग थ्रू माई नोटिफिकेशंस. सडनली आई सॉ दिस इग्नू वाला थिंग, दैट इग्नू में एक्सटेंड कर दिया उनके क्या बोलते हैं, जुलाई 2021 सेक्शन एडमिशन. एंड आई वॉज लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड, ओपन यूनिवर्सिटी का एक जो टैबू है दिमाग में, दैट दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट एज गुड एज रेगुलर कॉलेज. ये दिमाग में मेरे भी था, ये प्रेजुडिस मेरे को भी था. एंड यू लुक डाउन अपॉन पीपल हु काइंड ऑफ डू ओपन वाले से कुछ. तो आई डिडंट वांटेड टू. आई वाज लाइक, ये क्या है ओपन ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई वाज लाइक, इट्स बेटर देन सी you don't want to do English literature. I mean, you're not that interested in pursuing it. You're just doing it for the sake of it, just to have something backing you and then go for what you really want and just shut people's mouth for at least 2 years. That's the whole point about it, because honestly speaking, I still don't know what I'm going to do with it. Yeah, so you're just doing it for just to add something into your resume for now, and then yeah, that's it. And also to make your parents happy, because they have been constantly chipping that for like I don't know how many years कि कर ले हमारे बाद कौन पढ़ाएगा. Honestly, it's true. After them no one's gonna teach you, no one's gonna help you take up college or take courses like this. No, you're also not gonna do that. So वो थोड़ा इंस्पिरेशन है जब ये लोग कह रहे हैं कि we are gonna stand with you, you are our child and you can study, come on, we are not telling you to get married or something, so let's do that, right?
you're lucky if you get parents like that. I mean, even though if it's a subject you don't want to do, but yeah. So I thought, like, okay, like finally. So I was looking for IGNOU wala thing, trying to get my mind wrapped around this whole idea. I accidentally clicked on some helpline number. I thought उनका नंबर है, कि मुझे बहुत सारे डाउट्स है कि जुलाई वाला अभी तक कैसे चल रहा है. अगर मैं करूँ तो मेरा इस साल बच जाएगा ना, ये मेन थिंग है. अगले साल भी मैं चाहिए तो ये सब कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ ये साल मेरे को छोड़ना नहीं है. ये साल का मुझे कैसे भी एक सेमेस्टर कंप्लीट करना है. लाइक एडमिशन चाहिए तो इस साल का चाहिए और अगले साल का. बिकॉज अगले साल होगा तो देन आई एम नॉट गोना डू दिस, आई एम गोना डू समथिंग एल्स ओनली. बिकॉज दैट व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग अगले साल ऑल्सो दिस 2 years जस्ट गोना. या तो इफ़ इस साल का है तो आई गेट इट. बिकॉज पिछले साल व्हाट हैपेंड वाज द मेन थिंग कि मेरा पूरा कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था. यू गेट मी. उसके बीच में तो किसी का भी कुछ भी कॉलेज का एडमिशन नहीं हुआ, बस 1-2 बच्चों का हुआ होगा. एवरीबडी गॉट द एडमिशन दिस ईयर ओनली. जिसको अब्रॉड जाना था, जिसने लैंग्वेज लेना था, जिसने जो करना था वो इसी साल किया है. तो एक मेरे को भी ये था, सारे दोस्तों का हो गया तो मेरा नहीं हुआ तो बुरा लगता है ना. तो आई डिड. तो मैंने गलती से हेल्पलाइन नंबर बताया अगले दिन सुबह. दिस इज़ 29th क्या बोलते हैं, नवंबर. ओके, नवंबर की बात है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लेडी हु सेड शी इज़ एन एजुकेशनल काउंसलर एंड शी टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट लुक वेरी सिमिलर टू IGNOU वाला थिंग. दैट होल प्रोसेस कि मतलब ऐसे पढ़ाई वैसा ये वो. और उसका भी डेट लास्ट, दैट इज़ द अगले दिन 30th नवंबर को फाइनल डेट है, एक्सटेंडेड. एज इफ गॉड वॉन्टेड मी टू टेक दिस, दिस इज़ योर लास्ट चांस, टेक इट. यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग आफ्टर दिस. इफ़ यू वॉन्ट इट, गो फॉर इट. ये लास्ट डे है, आप ले सकते हो. आई विल हेल्प यू विद ऑल द प्रोसीजर, एवरीथिंग. तो शुरू में यू वॉन्ट बिलीव ना पीपल लाइक दैट व्हेन दे से, नो मैटर हाउ जेन्यून दे साउंड, बिकॉज व्हाट इफ दे आर ट्रिकिंग यू. You have to look at that. Today's world is not that good. So I wanted time to think. But last में फ़ोन करते करते पता चला ये IGNOU का नहीं था, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से था. And they also had something similar, as in it was their Chandigarh University is a proper regular college. NAEC, UGC, NET accredited, everything. Best known for their placements. Best known for their placements. 100% placements मिलता है. And it's the finest in Punjab. So उसमें उस कॉलेज में उसका कुछ ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम था. ओके, नॉट ओपन, ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम. जो सब कुछ ऑनलाइन में होना है, तुमने वहाँ जाना नहीं है, तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी. तो ऑनलाइन में सेम जो भी तुम्हें रेगुलर कॉलेज में पढ़ाते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पढ़ाते हैं. बिकॉज देयर आर पीपल ना हु माइट वांट टू वर्क, who are professionals, who would want to do things like multitask things, उनके लिए बेस्ट है ये. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आजकल ये जो ओमिक्रॉन या जो भी नया नया वेरिएंट आ रहा है उसके में क्या पता अगले सालों में लॉकडाउन्स आ जाए, पिछले साल वाला फिर से किस्सा दोहरा जाए, वी नेवर नो. तो दिस लुक लाइक अ वेरी सेफ ऑप्शन, ऑल्सो बिकॉज आई डोंट थिंक माई पेरेंट्स आर येट वेरी रेडी फॉर मी टू लाइक फ्लाई अवे राइट नाउ. एंड थोड़ा अभी ये जगह भी मुझे इतनी पसंद आ गई कि जब छोड़ के थोड़ा कहीं जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है. पहले वाला घर था तो आई वुड हैव हैप्पीली गॉन, लाइक थैंक गॉड आई एम आउट. बट ये दिस प्लेस इज़ लाइक आई जस्ट गॉट यूज्ड टू इट एंड सडनली लिविंग इट फील्स बैड. सो आई वाज लाइक ठीक है, देखते हैं. एंड देन आई आस्क्ड माई मॉम दिस और दैट. 2 बड़े मेरे पास रोड्स हो गए ऑफ अंडर द मास्टर्स ऑफ इंग्लिश वाला कोर्स. ठीक है, नॉट द अदर वाला थिंग दैट आई वांटेड टू डू. एंड आई वाज लाइक अब इसमें से मैं क्या करूँ. मैंने प्रे भी किया, मैंने मॉम डैड से पूछा, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पूछा. सजेशंस इंपॉर्टेंट है थोड़े ना. अपने जोश में जाके कर लिया, बाद में पता चला ये कुछ गलत था. एंड देन आई टॉक टू देम एंड दे वर लाइक लुक एट व्हाट यू थिंक इट इज़, कौन से में ज़्यादा सही है, कौन से में तुम्हें ज़्यादा. एंड आई लुक एट चंडीगढ़ में ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है. ऑफकोर्स IGNOU इज़ समथिंग दैट वेरी रेप्यूटेड, वो भी नेट UGC वैलिड है, बहुत एक्सटेंसिव ही पढ़ाई होती है. बट वो सब सेल्फ है, उसमें मतलब ज़्यादा कोई वीडियोज़ दे डोंट डू दैट, इट्स ऑल सेल्फ स्टडी. इसमें मुझे ज़्यादा पसंद है इनका जो LMS प्रोग्राम है, दैट इज़ द होल ऑनलाइन में जिस तरह से जिसके थ्रू वो मीडियम के थ्रू वो पढ़ाते हैं. देयर इज़ अ वेबसाइट एंड देयर इज़ ऑल्सो एन ऐप. आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल ऑफ दैट इन दिस वीक. उसमें देयर इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ PPT, देयर इज़ नोट्स, देयर वीडियोज़, देयर इज़ लाइव सेक्शंस एवरी अदर डे. यू अटेंडेंस कुछ नहीं है, आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर लो. एंड जो भी वो बोलेंगे इट्स गोना बी सेव्ड एज वेल.
and they'll also send you the whole book wala thing, you know, to your home if you want. And if you don't want, वो नेट पे सब कुछ ऑलरेडी है, उसी साइट में है. अलग से भी चाहिए तो you can obviously check ना. So it looked very cool, and even for your assignments, you know, everything online. Just have to send for the subjective type ones. You have to send them a parcel. A post to the college. And even for the exams, you don't have to go there. You can sit at home and do that. I was like, wow, great. And semester wise paise bharna and all that, I'm not getting into the whole details of it. So the summary of all of this is that I have gotten my admission. I took the chance, so I thought I'll go with Chandigarh one, also because its placements is good. What if I get something with that through that? I checked a lot, I researched a lot about them. They are a very, very, very accredited college, and it's not someone tricking me. It really is a nice college. एंड नाम में भी सुनने में लोगों को अच्छा लगने लगा, यू नो, जितने लोगों ने बीच में, एवरीबडी वॉज ऑलरेडी, जब भी कोई कॉल करता है फर्स्ट थिंग इज उसको मिला कुछ नहीं एंड ऑल दैट. एंड वेन एवर एवरी वन कॉल्स यू व्हेन दे हेयर, अभी रिसेंटली से माई पेरेंट्स हैव टोल्ड देम कि लिसन शी इज गॉट इन हियर, वो नाम में है पता नहीं क्या है, पीपल आर लाइक ओह दैट्स कूल. So that is a little relief after all those abuses that I got from everyone online and otherwise from the family and everything. Finally people telling, oh thank God, now we can shift our focus, you know, to somebody else and annoy them. So that is something that I'm very grateful for. What I want to say is, yes, I've gotten my admission for Masters of English. इस साल का ही है, एंड मुझे बस 4 महीने का पढ़ाई साथ में करना पड़ेगा. फरवरी में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, एंड दे सेड यू कैन जल्दी से आप कर पाओगे. कल मैंने ट्राई किया कि मतलब मैं नोट्स वोट्स लिखना शुरू कर दूँ, और when I looked at it, since I had already did a 6-month coaching thing for my exams, you know, for DU का, उस वाले के वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था. मतलब मुझे अच्छा इन द सेंस, मेरे को ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज पता था जो मतलब इस सिलेबस में होने वाला है. सो आई काइंड ऑफ नो द बेसिक्स and a little more than that, so it's very easy to like get it up. I don't know, it's too soon to say anything about it right now, because it's not an easy task to make up for 4 months of learning, you know, like everyone else has done. So I have to also give 2 assignments which everyone has given already. So they said they'll give you time because they obviously know you all have come a little late with the admissions, so they will give you guys time and all that. And everything is through there, and I really want to thank, if I don't think she's gonna watch this video, but that educational counselor, man, she is a gem. Like every single thing, बीच में admissions करते वक्त इतने बार क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, एंड शी वॉज सो स्वीट. शी वुड गाइड मी, शी वुड हेल्प मी, शी वुड इन मेरे लिए मेरे तरफ से उसमें जाके भी करके आई बहुत सारी चीज़ें. एंड आई एम लाइक, people like them should get more jobs, you know, and other than people who just can do the talking and do nothing for you. I mean, I've always wanted a guidance like this whenever I used to do application thing, because it is the most annoying thing for me, also the most hardest, because I always end up messing something or the other when it comes to application processes. और पूरे में शुरू से अभी भी मैं जो भी डाउट्स है मैं उनसे पूछती हूँ, बिकॉज शी इज़ द ओनली कॉन्टैक्ट आई हैव. ऑल्सो देर आर ऑल्सो ऑप्शंस टू आस्क देम एज वेल, बट ये थोड़ा ज़्यादा ह्यूमेन वाला वो लगता है कि कोई आके बता रहा है आपको, यू नो. एंड शी इज़ लाइक, एनी टाइम यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. आई फील गॉड हैज़ सेंड her into my life, you know, for this right purpose, and she was the one who called me, you know. I'll think of, like I wrote in my Instagram, I'll think that maybe that was a call from heaven saying, take this right now and do whatever you want later on, you know. These 2 years were the hardest for me. Those who know me closely know it. I didn't obviously spoke about it all the time, because what's the whole point? No one's gonna understand. But there's a God who knows your heart. There's a God who knows when you're hurt by people, their anger, their reactions. There's a God who knows that you're humiliated. There's a God who knows that his child's heart has been hurt and battered. So let me fix that. Let me take charge. Let me bring her the peace that she deserves. Let me give her a little bit of hug and tell her, listen, I'm here. I'm with you till the end of times. You know, your parents will leave you, your friends will leave you, your family will leave you, this world will forget you, but I won't. So like every other thing in my life, at the right moment, I won't say at the last moment, I would say at the right moment, God
had done this for me, and it is truly marvelous for me. Just the way we came to this place, this beautiful place, and the same way everything in my life since 12th में मेरा फर्स्ट रैंक आना स्कूल में किसी ने नहीं सोचा था. द राइट टाइम 12th में ही. पूरे ज़िंदगी मुझे कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं मिला, 12th में जाके मिला. करेक्ट टाइम. कॉलेज टॉपर थी मैं, सॉरी स्कूल टॉपर थी मैं. देन गेटिंग इनटू JMC बिकॉज आई रियली वांटेड टू. क्यों मुझे नहीं पता था, रैंडमली मुझे JMC में घुसना था फॉर इंग्लिश. इफ़ आई हैड रिसर्च्ड अ लिटिल मोर बैक देन जो मैंने आज किया, तो शायद मैं कुछ और अच्छी जगह पे पहुंच जाती. बट मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया. आई जस्ट वेंट अवे विद द फ्लो एंड टुक वट एवर केम माई वे. I wanted to go into JMC. God gave me JMC का admission first cut off में, and I made so many memories. 3 years, those 3 years where perhaps God was like मज़े कर ले. You know, honestly speaking उतनी पढ़ाई नहीं हुई थी. Just all of us having fun, chilling, making friends, memories. You know, it was a BA program thing. You can't expect more. So it's not like a very hard syllabus or something. It's very easy and very breezy. So you know, those 3 years God was like enjoy कर ले. इसके बाद बहुत रोना धोना होगा, बहुत ज़्यादा एडल्टिंग लाइफ वाला फेज़ आएगा, तो अभी मज़े कर ले, बाद में तुझे सज़ा काटना है. तो दैट वाज ऑल्सो ग्रेटफुल टुडे व्हेन आई थिंक यार क्या शायद मुझे वो 3 साल ऐसे वेस्ट करना था. आई मीन वेस्ट तो नहीं हुआ. यू गॉट बेसिक बैचलर्स जो अभी हर जगह का requirement है. wherever you apply, they ask you if you have a bachelor's, you know, at least a bachelor's from a well known college, and it is Jesus and Mary is a well known college, so that is always enough for me. But today I realized that was for good, because look at me now, I'm home. It's not like I'm going to college or something, although I'm doing college. I'm not going to make friends here, but I have memories of those 3 years, so that was for good. Everything is for good, you know. Even if you feel like ये गलती थी, no, it's not. It was meant to happen in your life for a reason, for a reason, for a reason. This is something that we keep forgetting when we are angry, when we are clouded by our own thoughts. I'm a very impatient person. Sometimes in my impatience, I tend to go back in my faith because I need things quickly in my life. I can't stand बहुत देर wait करना मुझे नहीं आता. And there are times because although I knew God will do everything in its time, that time was taking a little time. तो इस वजह से I was getting very impatient, very frustrated and very disheartened. But God knew me. He's always known me better. So He did what He had to do, and you know, did His magic. And yeah, so for 2 years I think I'm set. अभी now I have to go write notes and do all of that. Thank you for praying. I know a lot of people have kept me in their prayers, so I thought ये बनता है उनको थैंक यू बोलना यार, जो आपके लिए प्रेयर करते हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, यू नो, जस्ट नोइंग दैट समबडी आउट देयर हु डजंट इवन नोज यू इज़ प्रेइंग फॉर यू, इज़ विशिंग यू वेल, इज़ विशिंग यू goodness. That just makes my day. So thank you, God bless you. That's a life update for now. अब मैं और क्या ही कोई कंटेंट अभी मेरे दिमाग में फ़िलहाल नहीं है. अभी द मेजर थिंग इन माई हेड इज़ टू कैसे भी असाइनमेंट 1 करो. मुझे December 30 तक असाइनमेंट 1 करना है. तो दे सेड इट्स ईजी, यू कैन डू इट, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू डू कंप्लीट 2-4 क्या बोलते हैं यूनिट्स, एंड देन you'll be able to do that. That's what they told me. But anyways, let's hope everything goes well, and I'll be by the end of this course, hopefully I'll get some idea कि क्या करना है. लॉल अभी भी थोड़ा muddled mind है, but let's see. थोड़ा रास्ता खुला है, आगे भी और खुल जाएगा, right? Everything happens for a reason, and hopefully next year will be even more brighter. Next year I won't have to listen to people's stupid words. Next year I won't let's not go too far into it. Next year let's hope ये जो भी वायरस का थिंग अभी फिर से आ गया, ये वाला बकवास फिर से ना हो, because I'm just done with it. I just can't stand it anymore. Okay, and hopefully we can all meet and greet. And by the way, I'm here only. कोई दोस्त है मेरा जो मिलने आना चाह रहा है. Oh God, I forgot in Hindi only. Please come. We live in Greater Noida. You're free to come. We can chill, talk, walk. You know, we can do whatever of that. I miss my best friend although. Let's hope she comes next year. We can do some videos with her as well. I miss all my friends. So if any of my friends are in the city who have not gone anywhere out,
इसी मतलब नोएडा आसपास में हो, डू लेट मी नो, कम टू मीट मी. आई कैंट कम देयर, बट if you are coming here then do let me know, let's meet, right? And thank you for keeping me in your prayers. ये थोड़ा लंबा हो गया, but yeah, God is great. If you're going through something as terrible as mine or even more, know that it happens for a reason. After this comes a good day. Okay, बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है, एक बादल के बाद एक सूरज आता है. lol. And a lot of people have been already looking at me like she's gone nuts, so I think I'll stop it. Thank you, God bless you. Subscribe करना, like करना, comment करना. If you were also thinking where Jemima had gone, or if you have also kept me in your prayers or wished me कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए, ऐसा किसी ने सोचा हो तो प्लीज़ कमेंट करना. And to all the people who have got their admissions in whichever college, whatever course, God bless you. I hope it happens for the best in your life. I hope you learn something from it, not for the sake of it, but because you want to. Okay, having your heart in the right place is very, very important. God bless you. Goodbye.